Okay, Pankuri is not here. I'll start the chants. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि श्री गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Okay, I can't see a lot of people. So, welcome back. Let's just revise a little bit before we start reading Purport. So, we have just finished chapter 1. Now, evidently, we can just see one blind in chapter 1. But if we think of it, we can see 3 kinds of blindness in chapter 1. Yeah, first and very evident is Dhritarashtra. He is physically blind, and which is, and also materially blind, because he cannot, and this blindness is caused by his unfulfilled craving for the throne, which he never got, and it, followed through his life, and finally got him to get into this disaster. The positive meaning of his name, when he was called Dhritarashtra, means Dhrit, we discussed that Dhrit means to hold and Rashtra means kingdom. So an exemplary king who will hold the kingdom so close to his life, like in life air, like his pran. But rather the negative connotation of this name's meaning is that he's so blinded by the greed that he doesn't want to let go of the kingdom that he has got. So that is first and very evident blindness that I can see. Second is, so this is physical. He's physically blind. He can get away with it. The second blindness is Duryodhan's. He's blinded by his prejudice. His prejudice, his greed for the kingdom, first, and second, his envy towards Pandavas. And it was always, it propelled all his actions. He could never get away with that envy. And so much so that when even Krishna went for with the peace proposal, he just disposed that idea as well, that no, he never wanted to listen to anybody. And also his presumption due to numerical supremacy, that hamari sena, he had 11 akshoni sena versus Pandav's 7 akshoni sena. So the biggest thing, he completely missed the Krishna factor, that Krishna is on the other side, and it can disrupt any of his material calculations that he had. So that is second blindness. But third and most relatable to all of us is Arjun's blindness. He was blinded by compassion and attachment. And like we all saw that how he entered into the arena and he was ready to fight, and he was calling the sons of Dhritarashtra Durbuddhir, that they don't know what they're doing. And suddenly when Krishna parked the chariot in between both the armies and he saw his people, he suddenly was overwhelmed, and he started calling them Swajan. Ye to mere apne hain. How can I fight with them? And then he gave various reasons. Can we just recall a few of the reasons that he gave in first chapter for not fighting? Anybody would want to say? From 1.28 to 1.3, he gave 1.30, he gave his first reason for not fighting. Out of compassion. Out of compassion, कि कैसे हम किसी को मार सकते हैं. Then second, he from 1.31 to 1.35, he gave another reason. Loss of enjoyment. What will Loss he of
yeah, what will I do if I get what I'm fighting for? Then from 1.36 to 38, he said, uh, fear of sinful Sinful reactions. reaction. पाप चढ़ जाएगा अगर मैं इनको मारूंगा. And then 1.39 to 1.43, he gave fourth reason. Destruction of dynasty. Family traditions खत्म हो जाएंगी, वरण संकर हो जाएंगे, the ancestors will fall down from the Pitralok, and a lot of things that he said. He gave his fifth reason after the second chapter started. So understand that ये चैप्टर वाइज जो है डिफरेंशिएशन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुई है, 45 मिनट्स में हुई है. तो इसको स्टोरी फॉर्म में समझो कि दो लोग कन्वर्स कर रहे हैं, और पहले आराम से पेशेंटली भगवान ने उसके सारे रीजन सुने, और जब उसने ही इज कंप्लीटली लाइक कृष्णा कैन सेंस हिज agonizing dilemma that he's torn between what is right and what is wrong, and that's what we are also, but he patiently waited till and even before he could seek help, Krishna kind of dovetailed his actions by making him to surrender, by calling him in chapter second जब start होता है second verse में कि कुत्तो कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर, ये कैसी बातें कर रहे हो ये. So he kind of chastised him, that like kind of shaking him, that what are you thinking about. And then जब finally अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, so he said शादी माम त्वाम प्रपन्नम, I surrender to you and please instruct me. हालांकि उसके बाद भी he kept on saying things, and he gave his next reason like indecisiveness, कि मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे भीख मांग लेनी चाहिए rather than fighting. So हम लोग की भी सिचुएशन काफी सिमिलर होती है. We also get stuck with things, we don't know what is right and wrong, and that's where this discussion between humanity and divinity will come to rescue, provided we understand and we try to in between the lines of what God has said and what Arjun. So Arjun, see how he's blinded, how much he's blinded by compassion, कि उसको पता ही नहीं चल रहा. वो एक तरफ से वो भगवान ने बोला ना कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, 2.11 में भगवान ने बोला पंडितों जैसी बातें कर रहे हो. क्यों बोला? क्योंकि पितृलुप्त हो जाएंगे, ancestors will fall, sinful reaction. So he is not even listening to what he's saying. He's saying कि कुछ है जो मरने के बाद रहता है ना, तभी तो वो जाएगा. सिंफुल रिएक्शन किसका होगा? अगर मरने से डर लग रहा है तो बॉडी के खत्म होने का डर लग रहा है, बट इन हिज माइंड ही इज क्लियर दैट देयर इज समथिंग व्हिच गोज बियॉन्ड दिस बॉडी, बिकॉज सिंफुल रिएक्शन तो उसी का ही होगा ना. and the people who have gone before him, they are situated somewhere from where they will fall. पितृलोक में है तो कुछ तो गया है ना यहाँ से. तो भगवान ने तभी तो बोला पंडितों वाली बातें भी कर रहे हो और मूर्खों की तरह भी बात कर रहे हो. सो यू नो देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी, बट स्टिल यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट ओनली दिस बॉडी, and you don't want to think about other things. You are attached to the body because you can see the body, but you are also attached to people who have gone before this, leaving their body here. So what are you thinking? What, sometimes that's what happens. We are so overwhelmed कि हम देख ही नहीं पाते, इतना foggy हो जाता है सब कुछ. Am I making any sense? Yeah? Okay. चलो अब पढ़ते हैं. So 2.4 तक पढ़ा था हमने. I think 2.5 भी पढ़ लिया था. We have to read from 2.6. Okay. Yeah. Riva, you can start today. गुरु अहत्वा हि महुन् भवन् 2.6. 2.6. sorry. न चेतत् विधं कत्रनं नो गर्यो यद् व जयम यदि व नो जयः यन् एव हत्वा न जीवं स्वं समस् ते व्यस्ताहि प्रमुखे धृतराष्ट्र. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield.
Arjun did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence, nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still, if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjun definitely prove that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous as his qualities combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjun was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there's no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there's no chance of liberation. Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. Do you want to summarize in your own words? Yeah. So this was Arjun still saying that he doesn't want to fight against his family because he doesn't know what is better, fighting and winning or being conquered by them, because both sides have their pros and cons. So that was his dilemma that he was going through in these verses. Okay. Sonal, you want to read text 7, 2.7? Maybe can we ask two people to do the purpose Yeah. for 2.7 Yeah. so that you get That's- time to meditate on it? Yeah. Yeah. Thank you. So Sonal, you can read the Sanskrit part, the translation, and the first paragraph of the purport, and then Ayana can finish it. Okay. कर्पण्य दोषापहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुदा चेत यत् श्रेया स्यान् निष्तं ब्रूहि तन् मे अस्यस्ते हम सदि मम त्वं प्रपन्नम्. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of misery, weakness. In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered onto you. Please instruct me. Purport: by nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is a perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the signs of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not, therefore, remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. That is the purport of this verse. Who is the man in material perplexities? It is he who does not Wait, Ayana. Okay. Let Sonal first talk about what she's read. Yeah. Thank you. Okay, so basically, it is being mentioned that in the material world,
we need a spiritual master who will guide us, just like for all of us. I would say, Mataji, you are that spiritual master who's guiding us, to letting us know that how we should lead our life, and without, with having all these material, I would say, um, distractions with us. We must understand that things would happen with us, but still we need to know that how are we going to handle it, how are we going to make things out of it. And that's what it mentioned, that we all need a spiritual master in somewhere in our life, because and also it's mentioned that no one wants fire and yet it takes place. So we don't also want worries with us, but things will happen in life. All we need to know is that how are we going to resolve it and take things forward. Yeah, good. Just barring one thing, I'm not qualified to be anybody's spiritual master, so I'll take that thing out. But yes, जैसे कि material problems जो भी हमारी होती हैं, suppose you're unwell, you go to an expert to seek help, है ना? जब आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कहीं ट्रैवल करना होता है, आप ड्राइवर के साथ जाते हो, कोई भी चीज जिसमें जो हमें नहीं पता, we learn it from somebody who is expert in it. And similarly, these are subtler issues. जो ये तो gross issues है जो दिख रही हैं बड़ी problems, but there are certain things which we cannot see. Our worries, our problems, our pains, our attachments, those subtler things. So unse nikalne ke liye we need somebody who's expert in that knowledge, and that task is taken up by the spiritual master. What I am doing is, I'm your shiksha guru. I can just guide you towards that this is the process that you can follow, because I have followed it and it has worked for me. मेरा उतना ही काम है. But आपकी लाइफ में आपके spiritual master जरूर आएंगे, provided you would seek one, you would request Krishna to send one, because and I'm sure that he will send, because अभी तक भी जो हुआ है वो ही करा रहे हैं, तो आगे भी वो कराएंगे. So yeah, that's why we need an expert who can take us out from here where we are stuck. Okay, thank you. Good, Sunal. Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brahad Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yo va etad aksaram grage aviti swamal. Can you help me, Niyati, with this? Ayana, your voice is not clear. Are you wearing your earphones today? No. It's getting muffled. Yeah. Yova itat aksharam garge avidyatya vasmal lokat prayati sa kripanaha. Okay. He's a miserly man who does not solve the problems of life as a human, and who thus quits this world like cats and dogs without understanding the signs of self-realization. This human form of life is a most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahmana, or who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. Ya etad aksaram karki viti tvasmal lokat praiti sa Brahmana. The Kripanas, or middle-aged persons, waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc., in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can also be found in lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wishes to protect them from disease were cause of his perplexities.
Although he could not understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks between the masters and disciple are serious, and now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is his first disciple of understanding Gita. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool who is trying to understand Bhagavad Gita. Okay, so this has a lot of things to understand. So firstly, here it's described that who is the man in material perplexities. So the person, like we spoke about, consciousness is low in animals. Here it is described that people who do not use this human life to understand the meaning or their purpose in life or self-realize are just like those animals who have low consciousness, who cannot actually, they are not capable of doing that. So our life is as useless as animals who do not have that consciousness. And the second part of it is that we are very lucky to attain this human life, and we should utilize it in understanding the science of the life or the science of the problems that we are facing. So Bhagavad Gita helps us understanding that, and a spiritual master guides us to it. Then it's mentioning the problem that, like, after this, it's discussed like how Arjun is in the same situation. Like he is basically he's basically facing this disease called skin disease, which I'm guessing that he thinks that every person he's related to, like by blood, is like he has to save them, because that's what we usually think, that if we are related to somebody by blood, we can save them or they can save us from any disease or any problems, because we feel like we want to take their pain away, which is foolish according to, obviously, Bhagavad Gita, because this is material attachment. We are not spiritually connected, like as of now. And so here it's given Arjun's example, and that he did not realize that his duty was to fight. The main duty that he had to perform, his dharma, was to fight. And he was trapped by this skin disease, and he thought that that is his duty, which is not. So now it is said that Krishna was the first spiritual master, because he first taught to Arjun, and because Arjun was very confused with everything that was going on, he was surrendering to Krishna, saying that you have to guide me. And since they were friends and cousins, actually, he said that all of this childish talk is over. We need to talk about the real problem here. And he basically surrendered to him. So now he was not looking at Krishna as a cousin. He was looking at him as a master. And Krishna is the first spiritual master. So Arjun subsequently is the first disciple of Bhagavad Gita. And it's also mentioned that Bhagavad Gita also explains how Arjun understood the Gita. So we can also read about that. And people who say that Bhagavad, like, we do not need to surrender to Krishna, we need to surrender Krishna within, are the biggest fools, because there's no such difference. Like, we're all connected to him. Yeah. Very good. Very, very nicely explained. Any questions, anybody? It's clear? Okay, let's move ahead. Yukti, you can read 2.8 till purport first paragraph, and then Gun, you can do the second half. नाही
nahi prapashyami mama mama panudyat yat chokam uchhosanam indriyanam avapya bhumav asapatnam vridham rajyam suranam api chadhipatyam chadhipatyam. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Purport. Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Sri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Here it has been said that even though Arjuna had every reasoning of not fighting with his relatives, he was arguing everything, and he had point for his every argument, but still in his heart he knew that he need the help of his master, that is Krishna. And it is said that no matter how well educated academically, or how much in high position we are, or how much scholarly we are, unless we have a spiritual master, there is no point of being so much educated. There is a direct need to be under the guidance of a spiritual master if one has to progress in his consciousness. And also it is said that the right way to select the spiritual master is the person who is 100% Krishna consciousness. He is the right person to be a spiritual master, who is fully in the Krishna consciousness. Yeah. So your academic knowledge and scholarship, is it of any value or not? Yes, Gun, would you like to answer that? It is in its own way, but not in solving the real problems of life that are being talked Right. about here. It's a part of our duty, that's why it's important, but not in terms of the problems that Arjuna is facing, not to solve those. Yeah. So in a way, it is important till you completely conclude why you're here for. You don't have to temporarily or artificially leave any of your duties, but at least now you know, you'll work with that mindset, how much importance you have to give to your material life. You know, you don't have, like, don't get too serious about it, because it will end. And after end, even if you're triple PhDs, the Yamraj will not take care of that part. You know, he's not bothered. So what is going to get bothered once you leave this life, because there's a huge long eternal life that you have, and now with this knowledge you'll parallelly you pick up that track also, and you start working on that. So for some time you'll have to lead a dual life. One is your bodily life, one is a life for your soul. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरू में, क्योंकि बार बार जंप करते हैं हम
the moment you start getting more into your spiritual path, एक तो difficulties आती हैं because obviously Maya will check you whether you're qualified to take entrance in this esteemed university of Krishna consciousness. Secondly, आपको खुद भी लगता है कि I don't know, अभी इतना faith नहीं होता ना, तो पता ही नहीं होता कि what we are doing is right or not. दिखता यही है. बट ये इसीलिए ये बार बार आ रही है सिचुएशन कि अर्जुन के सामने अनराइवल्ड किंगडम, और उसकी भी बात हो गई थी कि सब कुछ भी मिल जाएगा तो भी मैं खुश नहीं होने वाला हूँ. तो हम लोग जो रोज की भागदौड़ है वो अल्टीमेटली यही है ना, एक थोड़ी सी कंफर्टेबल हाउस, कंफर्टेबल कार, कंफर्टेबल लाइफ. सो एक लाइफ के लिए तो चल जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता. So it's good that we at least we have got something else to look on to, which will separate us from living animalistically, just enjoying. So good. Okay. You're thinking something, Niyati? Okay. Should Who's I go reading next? now? Oh, you are the one? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र केने नाया ये कृष्णा तत्वा वेता से गुरु हाया. It does not matter whether a person is a vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, Sat karma nipono vipro mantra tantra visharadha avaishnavo gurur na shyad vaishnava swapacho guru. A scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, is is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. The problems of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed, yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national, or international inebrities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. He sought, therefore, a refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysms of material nature. Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this. Krishne punye martya lokam vishanti. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. So here it's been talked about that even if someone is born in the family of scholars or is a learned scholar of Vedic wisdom, he is not the perfect bona fide spiritual master as compared to someone who might be born in a lower caste of family but still is 100% Krishna conscious. A scholarly Brahman is also unfit of becoming a spiritual master unless he is a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness.
The problems of material existence, which are four: birth, old age, disease, and death, cannot be counteracted or prevented, no matter how much wealth or development we achieve. And so there are many parts of the world where which are full of facilities of life, full of wealth, yet the problems are still present. This is why Arjuna says that even if he gets an unrivaled kingdom and supremacy like that of demigods on heavenly planets, even then he would not be able to drive away his lamentations. This just proves that material comforts can't drive away one's lamentations for family, social, national, or international inabilities. Um, Therefore, to get rid of the lamentation for once and for good, one must seek refuge in Krishna consciousness, and that is the right and the correct path for peace and harmony. Um, Economic development can be finished at any moment by the calamities of material nature, and and so when the results of our pious activities would be finished, we would fall down again from happiness and again to a lower status of life. So to prevent this and to get rid of the lamentation for good, we must seek shelter of Krishna as Arjuna is seeking to do. Yeah, good, good, nicely explained. So क्षीण पुण्य वृत्य लोकम विशंति, जो ये बात हो रही है आगे आएगा ये वर्स, कि जब आप पायस एक्टिविटीज, अभी तक हमें यही पता था कि कुछ अच्छे कर्म करने से अच्छा होता है हमारे साथ इस लाइफ में भी और उसके बाद में भी हमें हायर प्लैनेट्स मिलते हैं, स्वर्ग जिसको लोग बोलते हैं, स्वर्ग में जाओगे, बुरे करोगे तो नर्क में जाओगे, अच्छे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। पर स्वर्ग में भी एक लाइफ जो होती है वो टेम्पररी होती है, इटर्नल लाइफ नहीं है। तो फिर जब खत्म हो जाएंगे सारे पुण्य आपके, जो भी आप बास्केट फुल ऑफ योर कर्मास, गुड कर्मास, आपने बहुत सारे डोनेशंस दिए, आपने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, आपने बहुत लोगों के लिए घर बनाए, पर जब जब वो सारे आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। और ये भी नहीं पता कि यहाँ आने को मिलेगा कि वहां पे आपसे ऐसी कोई गलती हो गई कि आपको बिल्कुल ही जैसे कि देयर वाज अ किंग कॉल्ड एज नहुष, भगवान की ही डायनेस्टी में बहुत ऊपर आते हैं ये, बहुत शुरू में सत्य युग में आते थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट 100 अश्वमेध यज्ञ उनसे हुए। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली करता है ना, ही इज मूव टू द हायर प्लैनेट। तो उनको स्वर्ग में जाने का इंद्र की पोजीशन एक्चुअली उनको मिली। इंद्र को उस टाइम पे टेम्पररी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी, उनसे कोई गलती हो गई थी, तो उनको इंद्र की पोजीशन के लिए चूज किया गया एंड ही वाज मूव्ड ऑन दैट पेडेस्टल। पर वहां जाके यहाँ पे इतनी बायस एक्टिविटीज की दैट ही फाइनली गॉट दैट रोल। पर जब वहां गए और जब वहां की ऑपुलेंस देखी, ही वाज सो ब्लाइंडेड बाय इट दैट बाकी तो जो मजे वो कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ में ही स्टार्टेड आइंग ऑन इंद्राज वाइफ सच्ची, कि अब ये भी तो मेरी होनी चाहिए, अब ये मेरी पोजीशन है तो ये भी मुझे, बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड ही थॉट दैट शी शुड सिट विद मी। एनीवेज फिर उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की अगस्त्य मुनि से सच्ची ने कि मैं तो आई एम अ गुड वाइफ, आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर मैन। फिर उन्होंने कुछ प्ले करके, बिकॉज व्हेन ही वाज गिवन दैट पोजीशन ही वाज आल्सो गिवन अ बेनेडिक्शन कि जो भी उनके सामने आएगा उसकी आधी पावर उनके पास आ जाएगी। तो उस पावर से भी वो बिल्कुल बौखलाए हुए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, तो कोई भी सामने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जो भी उनको समझाने चाहते पहले तो उनकी पावर आ जाती तो और स्ट्रांग हो जाते। तो फिर कुछ उन्होंने दे डिवाइज्ड अ प्लान, और वो प्लान के बाद फाइनली जब उनको चौंकाया गया तो ही हैड टू फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ सर्प। वो फिर उसके बाद सांप बने, कितने जन्मों तक वो सांप बन के पड़े रहे, अजगर की योनि में आ गए। सो राइट, यू नो, कहाँ से यहाँ से एलिवेट हुए, इतने सारे अच्छे काम किए, एलिवेट होके आप स्वर्ग में गए, आपने स्वर्ग का आपको राजा बना दिया गया, controller. Indra is the controller of all the demigods, and then you have fallen into a uni of a सर्प। So it is, तभी कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है, you have to be very very careful। और आप लोग तो सब लोग योग के स्टूडेंट्स हो, सो यू अंडरस्टैंड
दैट कुछ बाहर है ही नहीं, तभी तो अंदर सीख करने जाते हो। जो समाधि होती है वो क्या होती है? मैं तो बहुत ज्यादा नहीं मैंने कभी किया, बट मुझे लिटरली द वर्ड समाधि, व्हाट डज द वर्ड समाधि मीन्स? एनीबडी? समाधि जो लिटरली संस्कृत वर्ड है ना, सम धी, धी मतलब ब्रेन, माइंड, नॉट ब्रेन, माइंड, और सम मतलब इक्विमेनस, सम मतलब कोई भी चीज, कोई डुअलिटीज नहीं है, फ्री ऑफ डुअलिटीज, सम रहोगे आप, और अपने माइंड को उस समता में स्थिर करना, दैट इज समाधि। तो दैट मीन्स आप अपने आप को बाहर से समेट के कहीं अंदर लाते हो और अंदर में कुछ सीख करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कट करके, दुनिया से कट ही करते हो ना। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू कट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, और फिर आप उसी समाधि से निकल के वही वर्ल्ड इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, उसी में घूमना शुरू कर देते हो, उसी में रियलिटी ढूंढनी। जबकि आपको पता है कि जो थोड़ी सी पीस आपको मिलती है वो दुनिया से कट के जो आपको पीस मिलती है, इट इज वेरी सिमिलर टू द पीस विच वी गेट वाइल स्लीपिंग। जब दुनिया से कट जाते हैं तो नई टेंशन्स ना, जब वो डीप वाली स्लीप आती है तो बड़ी अच्छी, हम कहते हैं ना बड़ी अच्छी नींद आई आज, एक डीप स्लीप में जो, और जिस दिन वो नहीं मिलती, जिस दिन ड्रीम्स आते रहते हैं या हम सोचते रहते हैं, उस दिन लगता है आज अच्छा नहीं सोए, बिकॉज द ओनली रीजन इज यू कुड कट ऑफ योर सेल्फ विद द मटीरियल एक्टिविटीज। यू कैन थिंक अबाउट इट। सो ओके, Anshul, you want to read 2.9? Sanjay Uvacha evam uktva ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्सा इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बाभुवः. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastier of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. Purport: Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjaya disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies. Although Arjuna was the time being overwhelmed with false griefs due to family affection, he surrendered onto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. So here, basically, Sanjay, when he was telling all the things to Dhritarashtra, when he came to know that Arjuna is in a dilemma, that he doesn't want to fight because of all the reasons which he stated. So, and he would prefer begging instead of fighting his own own kinsmen or own family members. So he was very happy that he would be leaving the battlefield and he would not fight. But Sanjay said he disappointed Dhritarashtra by saying that Arjuna has surrendered to Krishna, and he has become the supreme. He is the supreme master, and Arjuna has become his disciple. So this indicates that he would soon be free from all the false lamentations which he has been doing so far, and all the family affections, and would, when he will come to know, he'll have the self realization why he should fight, and he will surely fight. Then Dhritarashtra gets frustrated about that, and since that is what he's trying to say, that Arjuna will get enlightened by Krishna and he will fight at the end. Yeah, surely. And that is, and we can tell
that even Sanjay is a devotee of Krishna because he had that firm faith. धृतराष्ट्र को अभी भी समझ नहीं आ रहा, भगवान सामने आंखों के सामने. So the people who say कि भगवान को हमारे सामने आ जाएंगे ना तो हम मान लेंगे, तो नहीं मान पाओगे, क्योंकि भगवान को देखना जरूरी नहीं है, भगवान को समझना जरूरी है, भगवान पे विश्वास होना जरूरी है. नहीं तो विश्वास नहीं होगा तो सामने आएंगे और दुर्योधन की और धृतराष्ट्र की टीम में हम खड़े हो जाएंगे. हम तब भी उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे फॉल्ट कि ये तो नहीं है, हमने तो ऐसे परसीव किया था. बट अनफ्लिंचिंग फेथ, क्योंकि संजय समझा रहे हैं कि कृष्णा है वहां पे, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ मत हो, ये वॉर नहीं खत्म होगा, आपके बेटे नहीं जीतेंगे, ये यही साइड जीतेगी बिकॉज कृष्णा इज देयर. So that is a power a devotee has, that any circumstance come, any problem comes, he's sure Krishna is there now, he'll take care of it. It might not seem okay to my material sense, it is not making any sense to me materially, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, but कृष्णा ने किया है ना, there's no option के कुछ भी गलत होगा इसमें. That is an unflinching faith we must have on Krishna. Harsha, you will read 2.10. तम उवाच ऋषिकेश पराशन इवा भारता सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदाम वचा. Translation: O descendant of Bharat, at the time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. Purport: the talk was going on between intimate friends, namely the Rishikesh and the Gudakesh. As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord accepts one who wishes to be a friend, a son, a lover, or a devotee, or who wants him in such a role. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like master with gravity as it is required. It appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies, so that all were benefited. So the talks of Bhagavad Gita are not for any particular person, society, or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. So in this verse, Krishna's diversity has been revealed, that even though he is the master, and Arjun has voluntarily accepted himself as the student of Krishna, Krishna is ready to become his friend, like not his friend, but anyone's friend, son, lover, like he is ready to become, like, form any part of the diverse relationships. But he accepted the position of a master with Arjuna and dealt with that situation with that form of gravity as was required in that particular context and situation. And so therefore they talk, then this verse explains further that Bhagavad Gita is not, like, given the diversity of Krishna himself, this book itself is not for any particular person, society, or a community. It's open to everyone. It's open to all kind of diversions and diversities that there are out there. Yeah, good, Harsha. So yeah, भगवान की डाइवर्सिटी तो इसमें देखने को मिलती है ना, कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में भी अगर देखो, मटेरियल वर्ल्ड में भी, इवन इफ यू कॉल वन ऑफ योर फ्रेंड्स के मेरे लिए तू ड्राइव कर ले 24-25 घंटे, मुझे ड्राइव करके, एक बार तो वो भी बोल देगा आई एम नॉट योर सर्वेंट, या यू एक्सपेक्ट मी टू ड्राइव, और तुम पीछे की सीट में बैठ जाओ किसी अपने वेरी क्लोज रिलेटिव के साथ भी ना, कि आप ड्राइव करो मैं पीछे रेस्ट करो, दे विल नॉट लेट यू. अरे आई विल लुक लाइक अ ड्राइवर, ऐसा होता है ना. और यहाँ पे वो भगवान है और उन्होंने रोल लिया ड्राइव करने का चैरियट. और आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन मूवीज में, या उसमें इतनी क्लियरली तो नहीं दिखाते, तो जो जब रथ चलाया जाता है वॉर में, तो डायरेक्शंस चलाने वाला देता है ना, जो रथी होता है वो ड्राइवर को बताता है
तो बात थोड़ी कर सकते, इतना क्योटिक हो रहा होता है उस टाइम पे, इट्स हाई प्रेशर ड्रामा हैपनिंग, इधर से तीर चल रहे हैं, उधर से कोई भाला मार रहा है, तो जो चलाने वाला होता है रथी, वो पैर मारता है ड्राइवर को, इधर लो, इधर लो, नाउ मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द राइट, गो डायरेक्ट, सीधा जाओ। और ये सारी डायरेक्शंस दी जाती हैं अपने पैरों से, पैर मारते हैं वो, आचार्य ड्राइवर बैठा होता है और जो रथ पे जो इंजॉयर ऑफ द रथ वो खड़ा होता है, तो वो पैर मारता है। तो अर्जुन ने कृष्ण को पैर मारे होंगे और कृष्ण ने वो पैर सहे होंगे। सो दैट शोज कि सुपीरियर होने का एक्चुअली मतलब क्या है ना? He is ready to assume any relation, though he is our master, and we have to always remember that. But when we give him love, he is ready to become your servant. That is what is real love. इसमें कोई धोखा नहीं है, वो कुछ भी बनने को तैयार है अगर आप भाव देते। और येट इतने बड़े युद्ध में वो आराम से, वो उन्होंने कोई रोल नहीं लिया, was नॉन कम्बैटेंट। आप जैसे, और इस वही हमारी लाइफ में भी वो हमारे साथ करते हैं कि वो नहीं आके, ही इज अवेलेबल, जो उनको सारथी बनाना चाहता है उसके लिए वो सारथी बनने को तैयार है, जो उनको दोस्त बनाना चाहता है वो उनको दोस्त, और जो उनको दुश्मन बनाना चाहता है दुश्मन भी बनने को तैयार है। बने ना, लड़ाई भी की उन्होंने, जिनको हमने महाभारत में देखा, कितने लोग उनसे लड़ना चाहते थे, जिनके डिजायर थे, कंस था, पहले रावण थे, जो जो लड़ना चाहते हो लड़ लो। सो यस, वेरी वेरी डाइवर्स। पढ़ना एक और वर्स के हो गया, टाइम हो गया ना? Time हो गया, but I think we can finish this so that we can start from Anmol. You will be able to read, I think. Anmol or Vishali. Okay. Anyone who wants to read again? Okay, I'll read and finish the last one. Shri Bhagwan Uvacha Ashochan Anvashocastvam Pragya Vedamscha Bhasisha Gatasun Agatasumscha Nanushchanti Pandita. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Purport: The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him, there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. So here it is explained how we should give very less importance to this body and how we are just the soul and not the body. And those who are wise actually treat both the scenarios equally, even in a very happy situation or in a sad situation. And even for someone who's living or dead, the reaction always remains the same, because at the end of the day, we understand that who we are talking to, or all of us, are just souls. And this is just a temporary body. For example, the way we change our clothes every day,
we will be changing this body after every 70, 80, 90 years. So that's what Krishna is trying to explain. He is telling Arjun the same thing, that you're talking like a pandit right now, you're talking like a learned man right now, but you're not acting like one. So, yeah. Yeah, good, very good. Because a learned man or a real pandit will know what is truth and what is, हमने बात की थी ना कि दो पक्ष हैं, दो sides हैं, one that is truth and one that is not a truth, not true truth, or yeah, and truth, which is eternal, is not going to go anywhere anyways, so why to lament for that? Yes, Arsha. I just had a question after reading text 8. It's a little unrelated, but I just read a line usme which said that the lower caste people can also practice if they are a part of Krishna consciousness. But I just had this question that like earlier in history, when we read, many lower caste people were not allowed in temples. And mostly the priests belong to upper caste families. So why did that happen if like this movement, Krishna consciousness, and if this is available to everyone, irrespective of their caste? हाँ, तो बेटा यही तो सारा जो भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म बनाया था ना, वो कभी किसी कास्ट से रिलेटेड था ही नहीं, वो आपकी एबिलिटी से रिलेटेड था. तो पीपल हु वर लाइक लोअर कास्ट तो अब बन गया ना, क्योंकि वो शूद्र ने रोल लिया, क्योंकि उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, डिफेंडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट दे लाइक टू डू वर्क, लेबर, फिजिकल लेबर. तो उनको कैटेगराइज कर दिया एज ओके, देन यू विल बिकम द सपोर्ट सिस्टम फॉर द अदर 3 वर्नास. बट हुआ ये कि धीरे धीरे जब डिटेरिएशन आई, लोगों ने, वो प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट ही बन गया, उसने एबिलिटी देखी ही नहीं कि मेरी एबिलिटी क्या है, एंड ही हैज अपने आप ही आर्टिफिशियली टेकन द रोल ऑफ अ ब्राह्मण, जबकि आप ब्राह्मण नहीं हो, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली. तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया था वो सारा अब खराब होता गया, फिर वो कास्टिज्म बन गया, फिर उसके बाद क्योंकि आपने सबसे मीनियल जॉब्स कर रहे हो, अब वो मीनियल जॉब करने वाला बेटा, उसका बेटा चाहे सोल्जर बनना चाहे, पर वो क्योंकि मीनियल जॉब कर रहा है तो उसको शूद्र की डेफिनेशन दे दी गई, यू बिलोंग टू अ शूद्र फैमिली. हालांकि अब कलयुग में तो कहते हैं हम सभी शूद्र हैं, हम में अब कोई है ही नहीं, कोई और कास्ट, कोई हमारा वर्ण नहीं बचा, हम सब शूद्र हैं. बट तो उस हिसाब से ये बताया जाता था कि भगवान को पाना तो जिसने पढ़ाई भी नहीं की वेदों की, जो ब्राह्मण नहीं है, या जिसने डिफेंड नहीं किया कंट्री के लिए, कोई रोल नहीं प्ले किया, या कुछ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, फिर भी उसके लिए भी कृष्णा कॉन्शियस. तो लो कास्ट से यहाँ पे वो मतलब है, बट वही जब लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे, फिर प्रीस्ट ने बोला ओ ये तो गंदे हैं, ये अपना ध्यान नहीं रखते, लोग नहाते नहीं है, इनको मंदिर नहीं आने देना चाहिए. कभी भी राइट वे में नहीं बता पाए कोई चीज को, और इसीलिए खराब होती गई. इफ दे वर गाइडेड दैट यू नो व्हाई अ ब्राह्मण वुड वांट टू रेगुलेट थिंग्स इन अ टेंपल सो दैट सैंक्टिटी मेंटेन्ड हो, बट वो बताया ऐसे गया कि तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम नहीं आओ. आप उनको बता देते कि भगवान की सेवा में है और भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, आप नहा धो के आए, आप साफ होके आए, तो भगवान को आप हाथ लगा सकते हैं. बट वो उस टाइम समझाने के बजाय तुम इस लायक ही नहीं हो तो तुम मत आओ, विच इज अ रॉन्ग वे टू डू थिंग्स. बट दैट्स हाउ थिंग्स आर. मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होगा, हम यहाँ के क्यों में नहीं फंस सकते, यहाँ ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी ट्रूथ्स हैं, सबने अपने सच बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से वर्क करें. इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, भगवान का सच पता चल जाए हमें, जो भगवान समझाना चाह रहे हैं वो समझ आ जाएगा. और ये सारी जितनी भी नॉलेज है ना आर्शिया, ये हमारे अपने लिए है, हमने एक्टिविज्म नहीं करना, हमने दुनिया को नहीं रिफॉर्म करने जाना. सबकी अपनी बारी आएगी, अपने एक्शंस, और हर एक के पास एक कॉज बनेगा और उसको भी मिलेगा ये प्रसाद जो हमें मिल रहा है. बट अभी ये मर्सी सिर्फ हमें अपने लिए हुई है, हमें अपने को जानना है और अपने लिए एक ट्रूथ समझनी है, हाउ वी हैव टू, विच पाथ वी हैव टू फॉलो ऑन.
और अगर कुछ लाइक माइंडेड लोग आपके साथ आना चाहे, सबमिसिवली समझना चाहे, बाय ऑल मीन्स हेल्प देम, बट अपने आप को सुपीरियर और उनको इंफीरियर नहीं समझना, यही गलती हम नहीं करेंगे. Just because we know we have been given mercifully this education, that doesn't mean we start thinking, oh इसको तो कुछ पता ही नहीं है. क्योंकि ऐसा होने का भी डर होता है. जब हमें थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज आ जाती है, हमें लगता है कि अरे तुम लोग तो जानवर हो. नहीं, नेवर थिंक दैट. उसका टाइम नहीं आया. जिसको नहीं पता वो वैसे ही एक्ट करेगा. पर जब कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कीपिंग कृष्णा इन योर कॉन्शियसनेस, फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता. फिर भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हो आप. जो ये आया था ना पोपट ऑफ 2.7 में, जो ये उपनिषद का वर्स है, बृहद आरण्य का उपनिषद का, तो इसकी जो सेकंड लाइन है, यात एतद अक्षरम गार्गी विधि वस्मत लोकात प्रीति स ब्रह्मणा, जो इस प्लैनेट से भगवान को समझ के जाता है, ब्रह्म को समझ के जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है. हम जब भगवान को समझ जाएंगे तो हम भगवान जैसी क्वालिटीज ही हैं हमारे अंदर. हम भगवान ही हो जाएंगे. वी आर जो हमारा सोल है, जो बना हुआ है ना, जो उसका मैटर है, वो भगवान वाला ही है, सेम है. जिससे भगवान बने उसी से हम बने. हम अपने आप को भूल के वेरियस बॉडीज की तरह एक्सेप्ट करने लगे, तो इसलिए हमारी कॉम्पिटेंस भी कम हो गई. नहीं तो सारी वही कॉम्पिटेंस है हमारे पास. या आप कुछ और पूछ रहे थे? मैं कुछ और तो नहीं बता रही आपको, अर्षा? नहीं नहीं, I got it. I just had a follow up. I'm sorry if I'm taking up time. But अगर कुछ ऐसे priest जो होते हैं who are very revered and वो कुछ ऐसे लोगों को ऐसे treat करते हैं in a very like malicious way, तो क्या ये सब उनके कर्मा पे reflect नहीं होता? Obviously, बिल्कुल होगा. आपको एक लाइफ के लिए आपने अच्छे कर्म किए, आप अभी बन गए, आपको थोड़ी सी बेटर लाइफ मिल गई, फिर आपने मिसयूज की, फिर आप नीचे की योनि में चले जाओगे. तो बिल्कुल ऑटोमेशन पे है. कोई बैठ के डिस्क्रिप्शन पे नहीं काम करेगा कि आप कुछ रिक्वेस्ट, बाद में मौका नहीं मिलता. जब लाइफ खत्म होती है, व्हेन द डी डे कम्स, आप एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते हो. आपका जो आपने किया वो एकदम से रील चलती है और उसके हिसाब से यू आर गिवन द नेक्स्ट लाइफ. तो कर्मास पे डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम कोई सह लेगा, बट हम तो देखते हैं जो वाइज, इफ यू अंडरस्टैंड, तो वो ये भी बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब यही है. यहाँ पे भी आना शुरू हो जाता है. इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो. थोड़े टाइम के लिए तो यू कैन जस्ट गेट अवे विद थिंग्स. अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं तो पहले आप अच्छे कर्म भोग लेते हो. पर अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो कुछ चीजों का तो इफेक्ट इमीडिएटली आ जाता है. कुछ का इफेक्ट, क्योंकि वो तभी तो हम कहते हैं, हम समझ नहीं सकते कि कर्मों की कैसी गति है. कुछ का अभी आ जाता है, कुछ का अगले जन्म में आ जाएगा, कुछ का 1000 जन्म. धृतराष्ट्र को 1000 जन्म लेने पड़े 100 पुत्र खोने के लिए. तो है ना, 1000 जन्म पहले उन्होंने हत्या की थी, उससे नुकसान हुआ था, किसी की आंख फोड़ी थी, तो इसलिए 1000 जन्म के बाद तो पता नहीं कब मौका मिले दोबारा. बट नथिंग विल गो अनअटेंडेड. तो वो जो कर रहे हैं उनको मिलेगा, तभी हमने नहीं देना. दैट इज वाई वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. कई बार ऐसा होता है ना कि हम मुद्दा बना लेते हैं कि हमने ही पनिश करना है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है. जी ठीक है, यू कैन डू इट. मटीरियली दे आर रॉन्ग, बट यू आर स्पिरिचुअल सीकर्स. व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम ऑन देम? उनके लिए बैठे हैं, वो करेंगे. दे विल नॉट गो अनपनिश्ड फॉर श्योर. ये जो बड़े लोग कहा करते थे ना, वो बातें मे बी उन्होंने कभी स्क्रिप्चुरल एविडेंस नहीं दिया, बट दे वर कंप्लीटली कि भगवान के मंदिर में देर है, अंधेर नहीं. देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होगा. तो हमने ये सारी बातें सुनी हुई हैं. नाउ इट ऑल मेक सेंस कि उनके पास भी कोई एक नॉलेज थी जो कि प्रोबेबली वो पास ऑन नहीं कर पाए ठीक तरीके से, पर पता सबको थोड़ा थोड़ा अंदर से, क्योंकि डेटा तो सब में हमारे है ना, ये डला ही हुआ है. सबको पता है अंदर से कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. ये तो हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं अपने राइट एंड रॉन्ग को. चल इतना कर लेते हैं, कोई बात नहीं. किसको पता चल रहा है? अब पता चल रहा है ना कि वो साथ में बैठा हुआ है परमात्मा. एवरीथिंग इज बीन नोटेड.
what you're doing. Is it clear? Yes, Gun. So, in the verses that we're reading, Krishna is saying that don't lament for the body, and I'm like, go on to perform your duty because nothing will happen to the soul. But how is this good for the soul also, killing someone? And if karma is going to answer back everybody, then why does Arjuna need to kill them? I mean, they will get the repercussions maybe in the next life. So देखो, जो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान उसको पहले हमें मटेरियल लाइफ में भी तो जीना सीखना है ना, अभी हम फंसे भी तो हुए हैं ना। अगर अल्टीमेटली भगवान ने बोलना होता कि आपने बिल्कुल कुछ मटेरियल में करना ही नहीं है, तो वो तो पेड़ के नीचे चले जाते कि जाओ जाके वहां बैठो and think about me and you'll reach me. But because you have a life, like Arjun had a life to live, we also have a life to live. So we need to know कि what to give importance and what not to give importance. कीपिंग, ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि एक पैरेलल लाइफ चलानी होगी जिसमें एक मटेरियल लाइफ चलेगी। अभी तक हमारा क्या फोकस है? 99% फोकस इज ऑन मटेरियल लाइफ एंड 1% ऑन स्पिरिचुअल, कि कुछ तो है स्पिरिचुअलिटी। जब तक यहाँ पे नहीं आए थे, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो वो फोकस थोड़ा सा बढ़ा ना, आपने वहां से अपने आप को थोड़ा विड्रॉ किया और आपने स्पिरिचुअल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दिया। धीरे 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 अल्टीमेटली भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि किन चीजों पे हमें ध्यान देना है और किस पे नहीं देना। अब आप सोच रहे हो कि किलिंग इज नॉट गुड फॉर सोल, बिकॉज किलिंग हो किसकी रही है? किलिंग ऑलरेडी बॉडी की हो रही है, जो कि है ही एक इल्यूजनरी एस्पेक्ट, एंड दैट विल गेट अनफोल्डेड इन फ्यूचर चैप्टर्स, कि वो है ही नहीं। तो जो है नहीं उसको मारने से क्या फर्क पड़ेगा? आई नो इट इज difficult at this point to understand because हमारा सारा रिलेशन ही इस बॉडी के थ्रू है, हम अभी इसी को ही सच मान रहे हैं। पर सत्य वो होता है जो कभी खत्म ना हो, और जो खत्म हो रहा है वो सत्य हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्स में भगवान बताएंगे कि ये जो राजा लोग, मैं और तू अर्जुन, हम पहले भी थे और हम बाद में भी रहने वाले, है ना। और जो ये बॉडी है ये पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहने वाली, तो इसका मतलब ये बीच में भी नहीं है। बिकॉज इफ इट इज ट्रूथ, it has to prevail. Think about it. तो जो चीज पहले नहीं थी और बाद में नहीं है ना, उसका एक डेफिनेट आदि है और अंत है, तो फिर वो बीच में भी नहीं है। तो फिर बीच में क्या है? बीच में है हमारा मानना, हमारा भ्रम, our illusion of acceptance. आपने एक्सेप्ट किया तो वो है in like you have entered into a dark room and you saw that there is a snake, but when you switched on the light, it was not a snake, it was a rope lying there. But because of darkness you thought it's a snake, है ना। तो ना वो पहले स्नेक था ना वो बाद में स्नेक है लाइट जलने के बाद, पर आपने माना कि वो सांप है। सिमिलर सिचुएशन हमारी है, आप मान रहे हो कि हम ये हैं जबकि है नहीं। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्स 2.12, बट समझ आ गया ना, तो दैट मीन्स यू हैव क्रैक्ड भगवद गीता। पढ़ना थोड़ा सा खुद से कि जो चीज पहले नहीं है और बाद में नहीं है तो वो मिडिल में कैसे हो सकती है। सिर्फ हमें जो दिख रहा है उसी को ही सच मानना, वो ही भगवान समझाना चाह रहे हैं ना। कि कमरे में गए, सोचना इस बात के बारे में, आपने एक रस्सी देखी, डर लगा ये तो सांप है, कृष्ण ने आके स्पिरिचुअल नॉलेज दी, बत्ती जला दी कमरे की, तो वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। तो पहले भी वो रस्सी थी, बाद में भी वो रस्सी है, बीच में आपको वो सांप लगा। तो आपको लगा ना, कुछ लगा ना आपको, विच इज नॉट ट्रू। ऐसे ये जो बॉडी बीच में लग रही है ना, ट्रू ये है नहीं। दैट इज 2.12। कई बार 2.12 पढ़ोगे और
शायद 14 चैप्टर में जाके 2.12 का मतलब समझ आएगा, ऐसा होता है। मुझे कुछ वर्सेस बहुत लेटर जाके समझ आने लगे थे, सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें भी एकदम से समझ आ जाए, because these are very 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 deep verses. Second chapter is very deep. इसमें हर एक चीज हमें जीना सिखा सकती है। ध्यान से समझो इसको, पूरा जोर लगा दो अपना। अगर ये लाइफ को भी मास्टर करना है ना, तो ये सोचो कि अगर भगवत गीता मास्टर हो गई ना, तो ये लाइफ मास्टर हो जाएगी। ये सर्च है। ये वर्सेस हम ऐसे याद कैसे रख सकते हैं? आई मीन आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आई नो सबके साथ ही सेम प्रॉब्लम है, ये कलयुग में। पर इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में ओनली फर्स्ट वर्स, मैं भी रिकॉर्ड करके छोड़ सकती हूँ आपके लिए, पर अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव रिसाइटेड भगवत गीता। जिसका मीटर, जिसकी ट्यून आपको पसंद आ रही है, वो एक ट्यून पकड़ लो, ठीक है? बहुत सिंपल सी ट्यून ले लो, जिसकी भी आ रही है। अगर इफ यू वांट, आई कैन रिकॉर्ड दीज वर्सेस एंड पुट इट इन द ग्रुप। सेकेंड चैप्टर में 2.7, Krishna's turning point, Arjun's turning point when he takes the shelter. 11 is very very important. तो ऐसे मैं पॉइंट आउट करती रहूंगी, और अगर ये याद नहीं होंगे ना, तो ये एक्ट नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये फर्क है, ट्रांसलेशन विल नॉट वर्क ऑन यू। भगवान के शब्द भगवान के कहे जैसे कहे अनुसार दिमाग में आएंगे ना। अनुशोचंती, क्या बोला था 2.7 में अर्जुन ने? आम तो आम प्रपन्नम शादी माम। तो यू नो दोज वर्ड्स विल रिमाइंड यू हाउ टू एक्ट। कि क्या हुआ था 2.7 में? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कैसा कृपन स्वभाव हो गया था अर्जुन को, ऐसा फील हो रहा था आफ्टर ही हैज गॉन। जब आप टर्मोइल में होगे तो आपको याद आएगा कि ओ। एंड इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि सिर्फ अपने फोन के उस पर डाल लेना, वो है 2.14, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। सो ऐसे जब ये वर्सेस को मैं आपको पॉइंट आउट तो करती रहूंगी, कुल मिला के 700 वर्सेस में से टॉप 50 वी शुड लर्न बाय हार्ट। तो ये बहुत हेल्प करेंगे, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी भी। एंड व्हेन यू विल ट्राई टू हेल्प समबडी, अब तो आप रियल हेल्प करोगे। अभी तक तो आप जो कर रहे हो, जो सोसाइटी को आप दे रहे हो या अपनी फैमिली को दे रहे हो, वो कुछ नहीं दे रहे हो। नाउ योर व्हेन यू विल गेट दिस ज्ञान, तो आप असली में हेल्प करनी शुरू करोगे। फिर मानना कि आपसे भी कुछ काम हो रहे हैं आपके। यू आर नॉट लिविंग लाइक यू नो जस्ट अ मटीरियल लाइफ लाइक एनिमल्स। अब आप कुछ करने, नाउ दिस विल बिगिन योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तब आपको समझ आएगा, और तब आप ये सवाल करोगे ना कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई वंडर कि कई लोगों को क्यों नहीं दिमाग में आते। ये ऐसे बस चलते जा रहे हैं, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, जॉब मिल गई, चलो अब लड़की चाहिए लड़की चाहिए, शादी करनी है शादी करनी है शादी करनी है, शादी कर ली। फिर बच्चे हो गए, बच्चे 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 बच्चे, फिर अब बच्चों को बड़ा करना है, पर बच्चे बहुत बुरे निकले, बिल्कुल अच्छे नहीं है, छोड़ के चले गए। फिर बैठ के 5 7 8 अपने बूढ़े बूढ़े लोगों को जोड़ के उनके साथ बैठ के सारा टाइम बुराई करनी। तेरी बहू क्या करती है, मेरी बहू क्या करती है ना। और ऐसे पूरी लाइफ खराब हो जाती है, खत्म हो गई। फिर आखिरी में आ गया, अब तो हमें ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा, सारा ध्यान लगा हुआ है कौन सी दवाई खानी है बैठने के लिए उठने के लिए। अब आंख में इन्फेक्शन हो गई, अब कान में हो गई, वैसे से फिर एक दिन चले गए। फिर जिस दिन सब जाते हैं उस दिन मरकट वैराग्य, क्या है जीवन। आप जाते हो शमशान घाट में और वहां बोलते हो सबका ऐसे ही अंत आना है, यही है जी, दिस इज द रियलिटी, है ना। और फिर खत्म। फिर वापस आते हो, फिर आकर देखते हो आज कौन सी मूवी देखनी है। यस सयाना। Right now, when you explained the 12th verse, it reminded me of my final year of philosophy. So for some reason, everything that you said, we have learned it.
but from a Western perspective. So the example that you gave, the snake one, we've learned it through a mirage perspective. Like when we are very thirsty, we see that there's water, and like this whole life is an illusion. I think this is a debate between Copeland and Russell. I have the same, like I'm writing notes in the same book as my notes from philosophy. So is it how is that they're saying the same things as the Bhagavad Gita? Obviously they came much later. Is it possible that they're saying it from a Christian perspective, because both of the Russell and Copeland, both of them were Christian? So is it possible that after Bhagavad Gita was spoken, it somehow traveled to like the West, and it became like only the obviously philosophical scholars could understand what was said? And I remember vividly that I could not understand this topic and I left it in my final year, but somehow, like after you explained it, it's now a little more clearer to me because I've read it. So is it possible that it traveled there in the West? Obviously बहुत सारी स्टीवन कोवी की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, वो बहुत पहले मैंने पढ़ी थी शुरू में, बचपन में जब मेरा बचपन था। तो वो तो बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बोला दैट ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता, लॉट ऑफ ऑथर्स। पर देखो कृष्ण, अभी इसको भगवान की नॉलेज को ना किसी रिलीजन से नहीं मिक्स करते, जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं। अब हमें समझ आ गया है कि एक ही रिलीजन है, धर्म एक ही है सबका। तो भगवान ने जब जो जीसस है वो भगवान के बेटे ही तो बोलते हैं ना अपने आप को, आई एम सन ऑफ द गॉड। तो उनको भी सेम नॉलेज है, उन्होंने थोड़ी सी ऐसे फॉर्म में दी जितनी उनकी जो वहां की ऑडियंस थी जो उसको स्वॉलो कर पाती, क्योंकि बेस नहीं था वेदास का इंडिया में। एंड क्लोजिंग पीपल, इनका सबका भी बेस बन चुका है। हैविंग सेड दैट, ये ओरिजिन जब हम इनका सबका पढ़ेंगे ना, एक्चुअली तो भगवान के पूर्वज थे ययाति, उन्हीं के ही बेटे हैं जो सारे विश्व में फैले। जब पढ़ेंगे ना, जो ग्रीक्स हैं वो भी ययाति के बेटे थे, जिनको मलेच्छा कहा जाता है। और कृष्ण बुक में भी हम जब करेंगे बात तो आएगी। तो एक्चुअली तो वहीं से आया। फिर जैसे धीरे धीरे लोग दूर होते गए ना फ्रॉम द सेंटर कोर्स से, जब दूर होते गए तो नॉलेज कम होती गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन की और कम हो गई। तो उनको जिस फॉर्म में वो नॉलेज भगवान ने पहुंचाई, पर जो जहां पे भी बैठा है उसको जब ये नॉलेज मिलनी है मिल जाती है। बट यस यू आर राइट कि भगवत गीता से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और भगवत गीता की बहुत सारी टीचिंग्स और हमारे वेदास की भी टीचिंग्स लेकर ही बेस सारा यही है। डेटा सबके अंदर वही फीड है। किसी की पहले जन्म की लर्निंग हो सकती है, हो सकता है उसने कोई ऐसा कर्म किया, वो दोबारा से उसको ह्यूमन फॉर्म मिली और डिस्टेंट फ्रॉम द कोर, सो दैट ही कैन फाइट इट बैक एंड कम बैक टू द कोर। तो मैं इस तरीके से रैशनलाइज करती हूँ इन बातों को कि ऐसा होता होगा। जब कि कोई वहां क्यों जाके, उस रशियंस को क्यों मिल रही है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ओके दे हैव स्टार्टेड इट, दे हैव लेफ्ट इट मिडवे। अब वो दोबारा से उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बना कि आप इंडिया से भी दूर हो, जहां नाम भी नहीं लिया जा रहा और फिर भी आप नाम ले पा रहे हो। तो इस तरीके से वी कैन लाइक पुट देम इनटू पर्सपेक्टिव कि ऐसा हुआ होगा। बट यस, ये सारी जो बुक्स हैं, भगवत गीता तो ऑब्वियसली वेदों का अंत है, वेदांत है, उपनिषद है। ये तो जहाँ वेद खत्म होते हैं वहां भगवान। I took philosophy totally as a fluke because I wanted to get into the college that I liked because of dancing. And it's so weird that throughout those 3 years I did not like actually study. I just wanted to pass exams. But right now when we're reading the Bhagavad Gita, all of my studies are making sense because all of them, like all the philosophers, are influenced by obviously Bhagavad Gita. And yeah, my interest in Bhagavad Gita also started because of the first year, because first year maybe we studied what are like the different schools of philosophy, and that's how I learned it. So it's so weird because I'm going back. क्योंकि the one who has planned all this is beyond time and us. उन्होंने, उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर होती है। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्यों 10th 11th में ऐसे संस्कृत जैसा सब्जेक्ट पढ़ा, जो कि मतलब सिर्फ इसलिए के मार्क्स आ जाते थे उसमें अच्छे। और आज इट्स सो हेल्पफुल बिकॉज आई कैन रीड संस्कृत एफर्टलेसली, मतलब बहुत एफर्टलेसली तो नहीं बट फिर भी मच बेटर देन इफ आई हैड नॉट स्टडीड इट। सेकेंडली, पूरे लाइफ
सो मैंने गाना गाया स्कूल में, एवरी प्रेयर आई यूज्ड टू डू। और हमारे स्कूल में उपनिषद ही बोले जाते थे प्रेयर में, ईशो उपनिषद बोला जाता था। अब कोई मतलब नहीं पता था, पूरी जिंदगी गाली है सिर्फ रट्टा करके। और अब आज उन सबके मतलब समझ आने लगे हैं, वो सारी प्रेयर्स जो मैं गाया करती थी। और हमेशा से ऐसा सब लोग बोलते थे, ओ यू शुड बिकम अ सिंगर। नेवर नेवर इवन फॉर अ माइक्रो सेकेंड आई थॉट दैट आई शुड बिकम अ सिंगर। पर मुझे लगता था पता नहीं क्यों आवाज मिली है, मतलब मेरा मन तो करता नहीं है कोई सिंगिंग विंगिंग के मैं सिंगर बन जाऊं और मैं कोई बहुत फेमस हो जाऊं, या ये कुछ भी करने का मन नहीं। इवन फैमिलीज भी पुश करती थी, फिर भी मन नहीं करता था। और अब समझ आया कि वो सिंगिंग इसलिए होती थी ताकि उसकी वजह से मैं लाइमलाइट में थी हमेशा से, मेरे को सब कुछ गाने को मिला। आई कुड रीड रिसाइट ऑल दीज सीक्रेट टेक्स्ट। और जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धि तो होती है ना, भगवान का नाम अनजाने में भी लो तो वो तो काम कर ही रहा है ना, अंदर ही अंदर आपकी इतनी प्यूरिफिकेशन हो गई, आप चाह भी नहीं रहे थे। तो बिकॉज ही एक्ट्स ऑन यू, उनके प्लान होते हैं आपके लिए, बस अहेतु की कृपा होने की देर होती है। अहेतु की, बिना हेतु की कृपा होती है भगवान की, बस जब हो जाती है तो हो जाती है। फिर हम ऑब्वियसली, जैसे अयाना सोच रही है मैं भी ऐसे 2+2, एंड आई नो आप सबकी ऐसे स्टोरीज होंगी वेर यू कुड लिंक बैक के ये क्यों हुआ मेरे साथ, हाउ कम आई एम आई हैव बीन थ्रोन इनटू दिस क्लास, मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। I have seen Arshiya's progress. She wasn't very keen in the beginning. She just came because maybe Niyati asked her to come. So, yes, Arshia? No? You were keen? I just wanted to know more about it, like curiosity's sakes, like because I've always been inclined towards history. So when Yati told me she's organizing something like this, I was like, this is great. And I've always wanted to read all holy books. So I was like, this can be a great start. Yeah. भगवान ने आगे बताएंगे भी कि 4 तरह के लोग उनके पास आते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त। तो अर्थ मतलब जो पैसा चाहते हैं, आरती जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं, जिज्ञासु जो क्यूरियस होते हैं, और भक्त तो प्रेम में आते ही हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ पीपल हु अप्रोचेस कृष्णा, और उनको पता होता है हम उसमें से हैं कि नहीं है, इसलिए वो हमें ले आते हैं अपने पास। तो good to have this curious lot. We all can learn a lot from each other. And Gun is clearly very, very sleepy now. No? Okay. मुझे लगा बहुत रात हो गई है ना तुम लोग की। What are you saying? We sleep past like midnight. अच्छा। हाँ भाई, छोटे बच्चों की तो वैसे भी तुम्हारी पता नहीं कब रात होती है। My daughter takes a nap at 10:30 and then I said, what is this nap? She said, because I can't sleep so early, so I take a nap, power nap for half an hour. Then I sleep after 12:30. Yeah, I know you both are from same school. She was your junior, I think. She told me the other day. Okay, Gun was my senior in school when we were in India. So good. बहुत लकी हो तुम, बहुत बहुत ही ज्यादा भगवान की कृपा है कि ये ज्ञान पहुंच गया तुम तक, और अभी तो पूरा जीवन है तुम्हारे सामने इसको प्रैक्टिस करने के लिए। Any other thing? Any other comments? आज lot of people did not come, है ना? बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे मुझे। Few of them are traveling. बाकी है। Yeah, I guess most of them are traveling only. ठीक है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna everyone. Happy New Year. Hare Krishna and Happy New Year, and see you in New Year now. Happy New Year. Thank you. Happy New Year to everyone. Thank you. Hare Krishna and Happy New Year. Hare Krishna. Hare Krishna.